Paneer tikka, very popular Indian appetizer, loved by everyone. That's what I'm making today. Vanakkam, I'm Ruby and welcome to my channel. Paneer tikka के लिए मैं ले रही हूँ around 500 grams of paneer, one large onion and one green capsicum. Let's start the prep. आधा काट के बीच में से काट के and then we're gonna cut it into large chunky pieces. ऐसे बड़े बड़े पीसेस और इसके लेयर्स हटा देंगे. We'll use the big pieces. अंदर का कोर हम फिर कभी यूज़ करेंगे for other dishes. So around 1 cup of onions. शिमला मिर्च को भी हम बड़े प्याज के जैसे चंकी काटेंगे. So around this size, क्योंकि हम पनीर को भी बड़ा साइज काटेंगे. This is our chopped capsicum, nice big pieces, just like onion, and this is also around 1 cup. पनीर को भी प्याज और कैप्सिकम की जैसे हम थोड़े बड़े साइज में ही काटेंगे. So you can cut them in triangles or squares, whatever shape you want, or even rectangles. I'm going to keep it in squares. So I've cut them into nice big pieces. बड़े pieces इसलिए भी क्योंकि जब हम इसे mix करेंगे they are very soft and जब grill होते हैं तो बहुत आसानी से टूट जाएंगे. तो बड़े pieces काटने में ये आसानी से टूटेंगे भी नहीं. 2 heaped tablespoon yogurt, plain yogurt. 1 tablespoon ginger and garlic paste. 1 teaspoon cumin powder. 1 heaped teaspoon of Kashmiri chili powder, 1 teaspoon of coriander powder, 1 teaspoon garam masala powder, 1 tablespoon besan, gram flour, 2 teaspoon mint chutney, optional है, 1 चुटकी अजवाइन, just lightly crushing it with my hands. A little bit of kasuri methi, around 1 to 2 teaspoons, just crushing it with my fingers. Salt to taste. A little bit of black pepper. Half teaspoon chaat masala powder. And lastly, for our marination, very important for any tandoori or tikka masala is mustard oil. For that smoky flavor and that nice tandoori flavor, बहुत important है mustard oil. We'll smoke it and we'll add it to the marination, and then we'll add the rest of the ingredients, paneer, pyaz or shimla mirch. Smoking mustard oil. We'll give all this a very good mix. तेल इतना गरम था that it will cook the besan. If you prefer, you can add roasted besan, भुना हुआ बेसन आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कच्चा बेसन भी डाल सकते हैं और एकदम गरम गरम तेल, which will eventually cook it. Let's add in the paneer. You know, this is the best way to coat the vegetables and paneer properly. Make sure you get the marination on vegetables also. तो हम पनीर को कोल से स्मोक भी करेंगे for that authentic grill and tandoori flavors. We'll marinate it for about 10 to 15 minutes. आप ज़्यादा रख सकते हो तो आप वो भी कर सकते हैं. एक तेज़ पत्ता लेंगे. We'll just place it in the middle somewhere.
पनीर मैरिनेट हो चुका है, स्मोक हो चुका है, एंड ऑल वी नीड टू डू इज़ क्योर द पनीर एंड ग्रिल इट। पहले हम शिमला मिर्च ले लेंगे सो दैट इट होल्ड्स द पनीर एंड वेजिटेबल्स टुगेदर। अनियन, पनीर, ऐसे ही ऑल्टरनेट करेंगे वेजिटेबल्स को। You can put 2 in. Here we have, we've used all of it. हमने एक स्क्यूअर में 2 पनीर डाल, दे क्वाइट बिग पनीर, तो हमने एक स्क्यूअर में 2 पनीर डाले हैं। सो वीव मेड 6 skewers. Our grill pan is nice and hot. इसमें अराउंड 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ जस्ट टू कोट द पैन। इसको थोड़ा फैला लेते हैं। Pan is nice and hot. Our mustard oil is smoking and it's ready for our tikka. पनीर टिक्का को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सिर्फ जस्ट सो दैट इट गेट्स नाइस चार्ड मार्क्स, उतना ही पकाएंगे, हर साइड से चार्ड मार्क्स आ जाए। दैट्स आवर गोल। वी वांट टू कीप द कैप्सिकम अनियन क्वाइट क्रिस्पी। थोड़ा बटर से बेस्ट करेंगे। Please try this recipe and do not miss it. It's pure bliss. You'll love it. And when you do, please leave a comment. And please like, share, and subscribe to my channel. Thank you for your wonderful time. I'll see you next time. Bye-bye.